Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have successfully completed exercise 10.4 up to question number 4. Right? Now I hope you have understood all the basics of the first 4 questions. So now let us move on to the next question now in this video, that is question number 5. Right? Now this is a quite important and a lengthy question of this exercise, so you have to be focused while I am explaining you this question, right? So here you can see in this question it is given that 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 cm drawn in a park. So सबसे पहले मैं यहाँ तक का क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूँ with the help of a circle. So यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 गर्ल्स हैं जिनका नाम है रेशमा, सलमा और मनदीप. ये एक गेम प्ले कर रहे हैं बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल, राइट. सो एक सर्कल के ऊपर तीनों रेशमा, सलमा और मनदीप मैंने यहाँ पे शो किए हैं बाय बी, ए एंड सी पॉइंट्स, राइट. सो ये क्या है? रेशमा, ये कौन है? सलमा, और ये क्या है? मनदीप, राइट. सो these 3 girls are standing on the circumference of this circle that is made in a park. So पार्क में एक सर्कल बना हुआ है जिसके ऊपर सर्कमफ्रेंस के ऊपर तीनों गर्ल्स जो हैं खड़ी होकर गेम खेल रही है, राइट. सो दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ ये जो सर्कल है इसकी जो रेडियस है, लेट मी जस्ट जॉइन दिस लाइन हियर. सो ये जो रेडियस है दैट इज गिवन टू अस एज 5 cm, राइट. सो 5 cm, आई एम जस्ट डिनोटिंग इट हियर. You can see this distance is 5 cm, right? So let me just now move further that Reshma throws a ball to Salma. So आप देख सकते हैं रेशमा ने बॉल किसको थ्रो की? सलमा को. So let me just join Reshma and Salma like this. Let me just draw a better straight line like this. Now then you can see Salma to Mandeep. So यहाँ से सलमा ने किसको पास ऑन कर दी? बॉल मनदीप को. So this is how, right? Then Mandeep again transferred the ball to Reshma, right? So that will be like this. So let me just join that. So this is going to be the diagram according to the given condition, right? So Reshma ने ball pass on की Salma को and Salma pass on the ball to Mandeep and finally Mandeep again passed the ball to Reshma. So by traveling Reshma again got the ball. So ये तो था condition given. So हमें ये radius पता है इस circle की 5 cm. Now let me just check out कि और क्या given है हमें. So if distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each. So आप देख सकते हैं रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस है दैट इज गिवन टू अस एज 6 एंड सलमा एंड मनदीप के बीच में भी डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर, राइट. सो दिस इज गिवन इक्वल, राइट. सो यानी कि तीनों गर्ल्स जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे खड़ी हैं, राइट. सो टू ईच अदर यू कैन सी. नाउ द थिंग इज व्हाट इज नहीं नाउ द थिंग लेट मी जस्ट चेंज माई स्टेटमेंट हियर कि यहाँ पे रेशमा और सलमा के बीच में भी 6 मीटर का डिस्टेंस है, सलमा और मनदीप के बीच में भी 6 मीटर का डिस्टेंस है, बट मनदीप और रेशमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में 6 नहीं है एंड वो हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, राइट. सो दिस इज व्हाट आई हैव डन अ करेक्शन इन माय स्टेटमेंट. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, राइट. सो ये जो डिस्टेंस है BC, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, राइट. सो लेट मी जस्ट डिनोट हियर. सो हमें BC फाइंड आउट करना है. सो हमें यहाँ पे AB और AC का डिस्टेंस पता है 6 मीटर. देन वी नो द रेडियस ऑफ द सर्कल, सो दैट इज 5 cm, सॉरी मीटर. लेट मी जस्ट करेक्ट हियर. सो दैट इज इन मीटर्स. सो यहाँ पे ये हमें पता है. सो लेट मी जस्ट राइट डाउन थिंग्स गिवन टू मी. सो यहाँ पे AB का डिस्टेंस है दैट इज 6 मीटर. देन यू कैन सी AC का डिस्टेंस है 6 मीटर. देन OA which is the radius of the circle that is 5 meters and we have to find out BC. So हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. कैसे हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहली चीज, राइट, आई एम गोइंग टू राइट डाउन द सॉल्यूशन विद द थिंग दैट यू कैन सी वी आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग रेशमा, सलमा एंड मनदीप बाय पॉइंट्स B, A and C on a circle. So let us mark Reshma, Salma and Mandeep by the points B, A and C respectively
on the circle of radius 5 meters, right? So this is what is we have drawn in this diagram here. So this is the first step. So now let us make some space here. Now let us move further now. So सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे जो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, you can see that these two line segments AB and AC which are equal in length, right? So आप देख सकते हैं इस पॉइंट, जो इस पॉइंट A से सेंटर की तरफ जो ज्वाइन हो रही है लाइन सेगमेंट, that is actually the bisector of this angle, right? So ये जो एंगल बना रही है ये वाली लाइन सेगमेंट दोनों कोड्स के साथ, सो AB और AC यहाँ पे क्या काम कर रही है, कोड्स का काम कर रही है. सो लेट मी जस्ट राइट डाउन नाउ यू कैन सी, नाउ वी कैन सी that AB and AC are two equal chords, right? And you can see then we know that the center of the circle will lie on the bisector of this angle. You can see BAC. So and we know that center of the circle will lie on bisector of angle BAC. So ये एक प्रूवन थिंग है कि जब भी हम एक दो इक्वल लेंथ की साइड के टॉप वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सो दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ दैट, यू कैन सी एंगल एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज लाइंग ऑन दैट बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल, राइट? सो यहां पे दैट मीन्स कि ये जो एंगल BAC है इसका ये OA क्या है, बाइसेक्टर, राइट? सो नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू कि जब ये जो बाइसेक्टर लाइन है वो इसको डिवाइड कर रही है दो इक्वल पार्ट्स में एंगल को, ऑल्सो ये जो इस एंगल के अपोजिट साइड होती है उसको भी उसी रेशियो में डिवाइड करती है जो इन साइड्स की लेंथ है. गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर मैं यहां पे बोलूं ये दो कोड्स थी 6 मीटर ईच की, ये सेंटर था, तो मैंने कहा कि इस एंगल का जो बाइसेक्टर है यानी कि जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है उस बाइसेक्टर के ऊपर सेंटर ऑफ द सर्कल लाई करेगा. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू. देन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये A पॉइंट था, ये B था एंड ये C था, यानी कि एंगल BAC का ये OA क्या है, बाइसेक्टर है, राइट? ऑल्सो उसके बाद मैंने आपको बताया कि यू कैन सी दिस पॉइंट हियर. सो ये एंगल के जो अपोजिट साइड्स है उसको ये जो बाइसेक्टर है उसी रेशियो में डिवाइड कर देता है जिस लेंथ की ये दोनों साइड्स हैं, राइट? सो यहाँ पे ये 6:6 में इस अपोजिट साइड BC को डिवाइड कर देगा, राइट? सो यू कैन सी ऑल्सो द एंगल बाइसेक्टर of angle BAC divides the opposite side BC in the ratio of, you can see, length of its sides, right? So यानी जितनी लेंथ इनकी खुद की है इसी रेशियो में वो सामने वाली अपोजिट साइड को डिवाइड कर देता है, राइट? सो लेट मी जस्ट टेल यू, हमें यहाँ पे ये पॉइंट को कुछ नेम देना पड़ेगा. सो लेट मी जस्ट गिव इट अ पॉइंट M हियर, राइट? सो दैट मीन्स कि यहाँ पे BM रेशियो MC क्या हो जाएगा, 6:6, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों की लेंथ कितनी थी, 6 मीटर ईच. सो यानी ये एंगल बाइसेक्टर जो है वो अपोजिट साइड को क्या करेगा, BC को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा इन द रेशियो 6:6, जो कि इनकी खुद की लेंथ है, राइट? सो यू कैन सी हियर that 6 1 6, 6 1 6, this implies 1:1. You can see here, so यहाँ पे BM और MC जो है वो 1:1 में डिवाइड होगी. So अगर ये 1:1 में डिवाइड होगी यानी कि दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, that means M क्या हो गया, इस BC का मिड पॉइंट हो गया, राइट? So M is now the midpoint of BC, right? So let me just make some space below.
So if M is the midpoint of BC, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, that BM is equal to MC and that is equal to half of BC, right? So यानी कि यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि ये BM और MC अगर आधे आधे पार्ट्स हैं, इक्वल है BC के, so ये दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ BC होंगे, राइट? सो यानी पूरी लेंथ का हाफ है ये दोनों, राइट? दैट इज क्वाइट ऑब्वियस थिंग हियर. सो नाउ लेट मी जस्ट मूव ऑन हियर फ्रॉम दिस पॉइंट. अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं एट दिस पॉइंट. सो मैं यहाँ पे इस B और O को ज्वाइन करने वाला हूं, राइट? सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट, राइट? सो यू कैन सी हियर दैट दिस पॉइंट इज M. लेट मी जस्ट डिनोट इट ऑन दिस साइड M, राइट? सो आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे होंगे, एक तो है BMA एंड द अदर वन इज BMO, राइट? सो मैं अब इन दोनों ट्राइंगल्स को वन बाय वन लूंगा. देन यू नो दैट दिस बाइसेक्टर OA इज परपेंडिकुलर हियर ऑन BC, राइट? सो ये परपेंडिकुलर ही होता है अपोजिट साइड के, दैट इज ऑब्वियस थिंग हियर. सो यहां पर अब बात आती है, ऑल्सो यू कैन सी, यू कैन राइट डाउन, राइट दैट you can see OA is perpendicular to BC, right? So यहाँ पे ये एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के. You can also write it in the bracket here. Now let me just move further. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये और ये वाला एंगल दोनों कितने के हैं, 90 के. So ये दोनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है. So one by one I'm going to apply on the Pythagoras theorem on these two right angles, right? So starting off this thing, so सबसे पहले मैं यहाँ पे now in triangle you can see BAM, we have, you can see now हमें पता है कि 90 के अपोजिट साइड क्या होती है, hypotenuse. So that is the hypotenuse. So that means कि hypotenuse कौन सी है, AB. So AB square is equal to, you can see this is the base and this is the perpendicular. So P square plus B square. So यानी कि BM square plus AM square. That is we know by Pythagoras theorem. So you can write down here by Pythagoras. So I'm writing down in the short form that Pythagoras theorem. You can write it complete way, right? So यहाँ पे Pythagoras theorem से हमारे पास hypotenuse का square is equal to perpendicular square plus base square. That is what we can write here now. So let me just make some space above. Now moving on further into this, so you can see यहाँ पे hypotenuse AB is 6 meter here. So let me just write 6 square equal to, now you can see BM square as it is because we don't know the length of BM, right? So plus AM square. So what is AM? That is also we don't know. So let me just write it as it is. Now the next step is, we know that 6 square, that is 6 into 6, 36 equal to, now that will be BM square plus AM square. अब यहाँ पे let me just recall that we have to find out BC, right? So आपको पता है यहाँ पे BM जो था वो MC के इक्वल था और दोनों क्या थे, half of BC. So let me just rewrite that. So BM is equal to MC equal to half of BC. अगर मैं यहाँ पे 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, so 2 into BM, that will be the length of BC, what we have to find out in the question. यानी कि the distance between Reshma and Mandeep, right? That is BC. So this is this can be calculated by twice of BM, and that means कि we have to find out the length of BM. So यहाँ पे आप देख सकते हैं BM आ रहा है. That means अगर मैं इसको यहीं पे छोड़ दूं and transfer this on the left hand side, so ये plus का AM square यहाँ के क्या हो जाएगा, minus का AM square, right? So that will be, you can see 36 minus AM square is equal to BM square, right? Now let me just give it equation number first. So erasing the lower side here, so now let me just move further into this question. अब यहाँ पे मैं ये दूसरा right angle triangle लेने वाला हूं, that is BOM, right? So let me just complete that triangle first. So यहाँ पे इस BOM triangle के अंदर let me just take it. So now in triangle BOM we have, so यहाँ पे आपको पता है again यहाँ पे जो hypotenuse, अगर मैं by Pythagoras theorem बोलूं, so Pythagoras theorem, so यहाँ पे मुझे पता है that hypotenuse का square, that is OB square, is equal to perpendicular square plus base square. So what is perpendicular? That is BM square plus, you can see the base is
OM square, right? So यहाँ पे OB, what is OB here? You can see OB is the hypotenuse here and also the radius of this circle. आपको पता है सेंटर से circumference के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है उसका डिस्टेंस जो होता है that is known as the radius of the circle, and that is we know here that is 5 meters. So that will be 5 square equal to, now you can see BM is what we have to find out, so leave it as it is. Let me just correct that first. Then plus OM. Now talking about this OM, let me just draw this diagram here so that you can see what I'm talking about here. So you can see this was the diagram, then you can see this was B, A, M and O, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे OM की बात करनी है. So यहाँ पे OM को मैं कैसे निकाल सकता हूं? अगर मैं इस पूरी लेंथ OA में से AM को माइनस कर दूं, राइट? तो मेरे पास क्या आ जाएगा OM. So बिकॉज मुझे पता है OA माइनस AM क्या होता है OM. So यहाँ पे OA जो लेंथ है that is the radius of the circle here, that is 5 meter, and AM we don't know. So you can see यहाँ पे मैं OM को क्या लिख सकता हूँ OA minus AM. So let me just first substitute OA minus AM whole square here. Now let me just rub the space downward. Now जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे मुझे OA की वैल्यू पता है that is 5 here. So मैं यहाँ पे क्या substitute कर दूंगा 5 कर दूंगा और AM की वैल्यू मुझे नहीं पता, so leave it as it is, right? So यहाँ पे क्या आ जाएगा BM square equal to, यहाँ 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 into 5 25, right? So now we are here. Further let me just tell you, यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को क्या दे दूं सेकेंड इक्वेशन, राइट? सो नाउ वी हैव ऑब्टेन्ड टू इक्वेशंस हियर. यू कैन सी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं AM और BM दो वेरिएबल्स हैं दोनों इक्वेशन में सेम, राइट? सो ये दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल्स, यानी कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दें then we can get the value of both the variables, right? So perfect. You can see combination here. You can see two variables missing and two statements with the same two variables. So हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? Let me just show you. यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं इस इक्वेशन सेकंड में क्या चेंज करता हूँ, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ये पूरी चीज को, ये पॉजिटिव है, सो इधर आके क्या हो जाएगी नेगेटिव, एंड यहाँ पे आपके पास 25 ऑलरेडी था लेफ्ट हैंड साइड पे, ये प्लस की इधर आके क्या होगी -5 minus AM whole square, that will be equal to BM square, right? Now let me just give this as equation number second. So यहाँ पे अब देख सकते हैं आप दोनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड पे क्या है BM square that is same, यानी कि फिर लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी सेम होगी. So doing the same here, let me just make some space. Now you can see we have got this equal to this. So यहाँ पे सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूं 36 minus AM square. You can see this left hand side is equal to the left hand side of the second equation, that is you can see 5 minus AM whole square, right? So you can just match on here. This is the left hand side which is equal to this, right? So यहाँ पे इनको मैं solve करता हूं. So what it will be like, you can see 36 minus AM square as it is. Now 25. Now अगर आप ध्यान से देखें तो ये किसकी स्ट्रक्चर है A minus B whole square, right? Now what is A minus B whole square? Let me just tell you. A minus B whole square जो होता है that is A square plus B square minus 2AB, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं A की जगह पे क्या आ रहा है आपके पास 5 और B की जगह पे क्या आ रहा है AM. So you can see that will be A square. That means in the bracket, because यहाँ पे माइनस साइन है, so that will change the sign of the bracket value. So यहाँ पे ब्रैकेट लगा के आप देख सकते हैं A square क्या होगा, that will be 5 square plus you can see B square. So B कितना है आपके पास AM, so that will be AM square minus 2 into A into B. So what is A here? That is 5 into B, that is AM, right? So 2 into A into B, bracket closed. Now further let me just solve this. So 36 minus AM square as it is. Now 25 minus, now let me just open the square here first. So 5 का square क्या था 5 into 5 25 plus AM का square क्या होगा AM square. Now 2 into 5 that is 10, 10 into AM that is 10 AM with a negative sign. Bracket close. अब यहाँ पे मैं bracket open करूंगा. So let me just tell you that the sign of the inner terms will change, because आप देख सकते हैं minus plus क्या हो जाएगा आपके पास minus, then minus plus again minus, then minus minus, that will be plus, right? So 25 as it is, and you can see also the left hand side will be as it is. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे माइनस का AM स्क्वायर माइनस का AM स्क्वायर दोनों सेम है. ऑन द अपोजिट साइड दे विल कैंसिल आउट. सो
you can see further 25 minus 25, that is also 0. So हमारे पास बच क्या गया, you can see, let me just rub this here. So that will be 36 is equal to 10 am, right? So अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब 10 जो है मल्टीप्लाई में am के साथ, तो इसको कहाँ शिफ्ट कर दूंगा, in the division of 36. So that will be, you can see 36 upon 10, that will be the value of am, right? So आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 0 कितनी है, 1. So that means right hand side से एक डिजिट से पहले क्या लगा दूंगा, डेसिमल. So that will give the value of am as 3.6 meters. So ये हमारे पास am की लेंथ आ चुकी है. Now you can see हमने दोनों इक्वेशन में से सॉल्व करने से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. Now simply take this value am, that is 3.6, and substitute in equation number first. So यहाँ पे अगर मैं am की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, bm की भी वैल्यू आ जाएगी, राइट? सो कैसे हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके दोनों वेरिएबल्स की फाइंड आउट करते हैं, यू हैव सीन दैट. नाउ लेट मी जस्ट सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ am एज 3.6 इनटू दिस. So you can see now substitute am is equal to 3.6 meter in equation number first, right? Getting my point? So यहाँ पे आप देख सकते हैं am की वैल्यू कितनी है, 3.6. So let me just substitute that. So that will be, you can see 3.6 whole square equal to bm square, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 as it is. Now let me just write that correctly first. Now 3.6 square, so that will be 3.6 into 3.6. यही होता है 3.6 square का मतलब, यानी 2 times you have to multiply that. अब आप देख सकते हैं इसको इजीली कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, सो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा. सो डेसिमल रिमूव्ड, सो डेसिमल में कितना, डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 10. नाउ यू कैन सी 10 into 10, that is 100. Then 36 into 36, so that will be, let me just check out. So 6 is 36, 3 carry, then 6 is 18, then 19, 20, 21. So that will be 216, then 3 into 36, that will be 108, right? Now 6, 8 plus 1, 9, that will be 2 and 1. So 1296. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 36 into 36 किया 1296, 10 into 10 that is 100. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में कितनी जीरोस है, 2 जीरोस, यानी कि राइट हैंड साइड से 2 डिजिट से पहले क्या लगेगा, डेसिमल. सो दैट विल बी 12.96. तो इसका स्क्वायर क्या हो गया आपके पास, 12.96 इक्वल टू bm स्क्वायर. नाउ यू कैन सी हमें क्या करना है, 36 में से 12.96 को सब्ट्रैक्ट करना है. सो दैट विल बी, यू कैन सी 36.00 देन 12.96. सब्ट्रैक्टिंग इट, यू कैन सी इसको कैरी देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10, एंड दैट विल बिकम 9. सो 10 minus 6 is 4, then 9 minus, you can see that will be 0. 9 minus 9 0, then 6 minus 2, that will become, you can see 5 now. So 5 minus 2 is 3, then 3 minus 1 is 2. So आप देख सकते हैं कैसे मैंने इसको कैरी दी, that will become 10, 10 minus 6 is 4, ये 9 हो गया, 9 minus 9 is 0, then ये 5 बन गया, इसने कैरी दी थी, so 5 minus 2 is 3, then 3 minus 1 is 2. So you have got 23.04 equal to bm square. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं स्क्वायर रिमूव कर दूं नेक्स्ट स्टेप में, सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, राइट? सो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे इस डेसिमल को रिमूव करूं, सो दैट विल बी इन द डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 100, बिकॉज डेसिमल के बाद क्या कितनी डिजिट थी, 2 जीरो, सो दो डिजिट यानी 2 जीरो आ जाएंगे डिनोमिनेटर में. सो दैट विल बी, यू कैन सी 2304 अपॉन 100. नाउ अगर बात करें 2304 का स्क्वायर रूट की, सो 2304 क्या होता है, 48 into 48. You can just multiply 48 by 48. You will get 2304, right? So यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, you can see 48. So आप देख सकते हैं 2304 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 48. नाउ 100 क्या होता है, 10 into 10. So यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आप देख सकते हैं 10, right? So you can see that will be bm. Now you can see डिनोमिनेटर में कितना है, 0, 1 है. So यानी कि एक डिजिट से पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल. सो bm की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 4.8 meters, right? So this is the value of, you can see bm here, right? Now as I have told you कि यहाँ पे bm की वैल्यू का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, so that will become bc. So यानी twice of bm is bc, because ये दोनों क्या है, इक्वल है, bm mc. So as I have told you that to calculate, you can see bc here. Let me first rub this. So now you can see here, as we know that
BC is equal to 2 into BM, right? So यानी कि twice of BM, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने BM कितना निकाला, that is 4.8. So यहाँ पे रख देता हूँ मैं 4.8. Now you can see if I just multiply 4.8 by 2, so 2 8 is 16, 1 carry, then a decimal, 2 4 is 8 plus 1 9, so that will be 9.6 meters, right? So यहाँ पे मेरे पास जो distance है रेशमा और मनदीप के बीच में, that is BC, that is 9.6 meters, right? So this is how we have reached to the solution of this question. So the distance between Reshma and Mandeep is 9.6 meters, right? So you can see quite a lengthy question, but if you just focus on the steps that have been taken to find out the length of BC, which is the distance between Reshma and Mandeep, that will be 9.6 meters, right? So that was all in this question.